Students, we are going to further extend our topic about types of bioreactors. It's a continuation of our last lecture in which we discussed different types of bioreactors. We discussed the introduction of it, what are the strategy to select any material to be used as in the design of in the fermenter, and then we discussed how we select what type of bioreactor can be used according to the requirement, and then we discussed stir tank bioreactor and airlift bioreactors. Now we are going to discuss further types. The reference are again similar. In the last lecture, we discussed straight tank bioreactor and pneumatically agitated bioreactor, in which airlift bioreactor, loop reactor, and bubble column bioreactors are discussed. Now we are going to discuss about immobilized microorganism reactor, in which there are further types, and then we will discuss membrane bioreactor and flocculated cell reactors. So talking about immobilized cell bioreactor, as its name shows, there are some live cells, whether live cells, their enzymes, they are immobilized on the surface of different you can say particle, or they are just adhere to some surfaces. So enzyme, viable cell, plant, animal cells, they can be immobilized, and it can be divided into straight tank reactors, packed bed reactors, fluidized bed reactor. These reactors can also be combined and modified. When you immobilize some cell onto surface of some you can say synthetic surface, or on the surface of the fermenter, you can say, then they can be different type, they become different types of that reactors. So the choice of reactor design for an immobilized cell bioreactor would depend upon mass transfer requirement. It means the organism which you are using, its mass transfer requirement is to be checked. The oxygen supply and gas removal, whether the microbe, the organism is using carbon oxygen and removing carbon dioxide, whether it is the source of gaining energy is something different, how the nutrients, what are the nutrient requirements, and whether those nutrients they could be distributed well when the cell or molecule or organism is attached to something. So all these things to be need to be considered. Then particle characteristics on which you are going to adhere your living cell, that particle characteristics needs to be monitored or checked. In straight tank reactor, damage to the particle is greater than in the packed bag reactor. Obviously in straight tank reactor, there is agitation, there is stirring, there is constant mixing. So immobilized cell bioreactor are difficult to maintain in that medium, because there are a lot of pressure, there are shear forces, there are logical effects which can disturb the living cell itself. So, but in a packed bagged reactor, we will discuss in the coming slides. In packed bagged reactor, we have just immobilized cell on the or microorganism on the surface of some you can say synthetic surface, and there is no agitation, there is simple you can say air movement with the help of pumps. So the shear force and the shaking effect is less, which means your immobilized cell are not going to damage in this procedure. And then kinetic consideration, obviously, whatever the living organism is under use, the characteristics, the kinetic characteristics, how when what are the limiting substrates for that, what are its specific growth rate, all are considered. So, talking about the methods of immobilization, there are two types of methods of immobilization. One is active immobilization, other is passive immobilization. Active immobilization means that your living organism or cell is going to have chemical relation with the surface on which it is going to attach, whether it is making some cross linking with the surface, whether it is making covalent bonding with the surface, or it is going to interact into gels. They are all active immobilization. And about a passive immobilization, there is adsorption on some surface, the colonization on some surfaces. These are different approaches in immobilization. We will discuss these approaches later when we talked about biosensor. So up till now,
इतना ही काफ़ी है. Advantages of immobilized cell bioreactor, application to multi-step enzyme reactions may be possible. Where there are multi-step enzymatic reactions, their application is quite possible in immobilized cell bioreactor. The enzyme activity yields on immobilization is high. Whenever you immobilize enzyme onto some surface, its activity is checked to be higher. Operational stability is generally high. Operations for enzyme extraction or purification are unnecessary. It means that you are going to just maintain that cell on the surface or on some surfaces, and the enzyme extraction procedure you are just going to omit that, and purification is become unnecessary when you directly use some cell, and the enzyme activity in those condition is very well. Then you can say you can override the extraction and purification of enzyme step. Then high cell densities can be employed. You can use quite high number of cells for this purpose. Cell density and enzyme activities can be expected to be maintained over a long period of operation. As long as the operation goes on, cell density and enzyme activities they remain in position. Products can be easily removed from the immobilized cell. Immobilized cells appear to be less susceptible to microbial contamination. माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कम इसीलिए है ना कि उसके अंदर आपकी क्या कहते हैं फोमिंग नहीं बन रही है, आपकी कोई स्टिरिंग नहीं है, और आपका फर्मेंटर जो है वो उसके अंदर इन कुछ किसी चीज का आना और उसके बाहर जाना जो है वो कम से कम है, तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस कम रहेंगे इसके अंदर. डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके. डिसएडवांटेज क्या है कि जो एंजाइम्स आप यूज कर रहे हैं या जो सेल आप यूज कर रहे हैं उसमें आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट का एंजाइम तो है, लेकिन कुछ कैटेगरी एक्टिव एंजाइम और भी हैं जो कि क्या कर देते हैं, अनवांटेड साइड रिएक्शंस ले जाते हैं, या जो प्रोडक्ट का बनना है उसको लॉन्ग लिंगर ऑन कर देते हैं. ये भी डिसएडवांटेज है. सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ में सर्व एज अ डिफिएंट बैरियर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी. कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं जो कि जिनको सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है वो इजीली डिफ्यूज नहीं करने देती, तो भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी का इफेक्ट आ जाता है. उसके अलावा कंटेमिनेशन बाय सेल लीकिंग आउट फ्रॉम कैरियर में अकर. जिस कैरियर के साथ अटैच है सेल उसकी ही कंटेमिनेशन से मसला हो सकता है. द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. माइक्रोऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को कंट्रोल करना मुश्किल है इमोबिलाइज सेल के अंदर. ये हमारे पास इमोबिलाइज प्लांट सेल कल्चर हैं. ये देखें कि किस तरीके से ये जेल्स के साथ इनको अटैच करके प्लांट्स को इसमें ग्रो किया गया है. ये डिफरेंट इमोबिलाइज प्लांट सेल कल्चर्स की पिक्चर्स हैं. ये यीस्ट है, ये एक उसमें लिक्विड मीडियम में इंट्रैप हुई हुई है, जेल इंट्रैपमेंट हुई हुई है यीस्ट सेल्स की. अब बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर की. इट हैज रिसीव्ड increased attention in the recent year due to the advantage of other type. What are the advantages then? Most of these bioreactors developed for biological system involving cells as biocatalyst and are three-phase system: solid, liquid, and gas. Solid, obviously, your living cell are solid. Liquid is the your medium, and you can say all the chemical reactions are taking place in the liquid medium. So that is the liquid phase, and the gas phase is that if your biocatalyst is aerobic in nature, then gas is a must. Otherwise, the air must be there to have aeration or to give mixing. Okay, so if this fluidized bed bioreactor, they generally operated in concurrent upflow with liquid as continuous phase. Your liquid is making a continuous phase, and there's an upflow of the you can say medium, or you can say the reaction is going to start at the bottom and moving toward the upward. Usually, fluidization is obtained either by external liquid recirculation or by gas fed to the reactor. You can fluidize the bioreactor by liquid recirculation or by gas. You can use one at a time, or you can use two at a time. In case of immobilized enzyme, the usual situation is of two-phase system involving solid and liquid. Solid is as I already told that the solid is your immobilized enzyme, and the liquid is your fluidization material, which is whether recirculating
But the use of aerobic catalyst necessitate induction of gas air as the third phase. So if your biocatalyst is aerobic in nature, then the third phase is made by the introduction of gas, which is very much necessary for your biocatalyst. So, in comparison of conventional mechanical stirring reactors, FBB provide a much lower attrition of solid particles. Your solid particles, they don't get clogged, or they no, don't get fuzzy, because there is no agitation. So the biocatalyst concentration can significantly be higher, and washout limitations of free cell system can be overcome. In usual situation in stir tank bioreactor, if you use continuous or fed batch mode of operation, then your free cells, they can be washed out when you remove your product in order to maintain the constant volume. But in case of fluidized bed bioreactor, your this problem of free cell washout can be overcome, and the biocatalyst concentration in the medium remain high. In comparison to packed bed reactors, fluidized bed reactor can be operated with smaller size particle without the drawback of clogging, high liquid pressure drop, channeling, and bed compaction. These all are the side effects of packed bed reactor. There may be clog, there is a high liquid pressure drop, there is developed channeling may be developed, and bed compaction is the issue in packed bag reactor, because there are the layers of you can say your material having immobilized. You can say that in packed bed reactor there are different beds which are arranged one over the other. So as the liquid keeps on moving from them, they get clogged and they get compact with each other, and the compaction loses their surface area. And as the surface area becomes less, there may be or many more problems may develop. The smaller particle size facilitates higher mass transfer rates and better mixing. So the fluidized bag reactor, they can maintain small particle size, which facilitates is higher mass transfer. As you all of know, as the surface area of anything got increased, the absorption get increased, the transfer of fluids and liquids and nutrients got increased. So it is the advantage of this. The volumetric productivity attained in FBB is usually higher than in straight tank and packed bag reactor. So the volumetric productivity is higher in fluidized bag reactor as compared to straight tank and packed bag reactors. This is just generalized picture of fluidized bed reactor, that there is a substrate in from the bottom. There's a, you can say, fluid in form of liquid, or it may be in the form of gas, and your product is skimmed out from the top of the bioreactor. This is a skid mounted fluidized bed process flow diagram, in which you can say there is not a single bioreactor. It has many things associated with it, and you all of you know that bioreactors are not as simple as we said, but there are many auxiliary components or materials which are attached to it. Here you can see there's an influence and equalization separation tank. These bioreactors are mostly used in wastewater treatment. So you are going to have your immobilized cell here, and you move your wastewater influent from this pump. So in here, this picture, you can see different wells, flow wells, different accessory materials are there, and your effluent is getting from the top of the bioreactor. Next is packed bed reactor. Packed bed, as its name show, or fixed bed bioreactor are commonly used with attached biofilms, especially in wastewater engineering. So it means you are going to clean the wastewater, and there are attached biofilms, which are the, you can say, living cells which are going to clean that wastewater. Water is
is a waste from some industry. This thing is known to us, not the microbes. So for the microbes, that wastewater is a clean thing, so they are going to use it as their nutrient. So the use of packed bed reactors gained importance after the potential of whole cell immobilization technique has been demonstrated. After whole cell immobilization technique, it has shown its potential. After that, the packed bed reactor, it gain importance. So immobilized biocatalyst is packed in a column and fed with nutrient either from the top or from the bottom. It is similar to like if you people have perform either ever perform gel chromatography or ion exchange chromatography. All of you must known that there is some kind of material when we Cephedex type of material, when we mix that powder in a water, it becomes gelatin like material, and then we add our molecule of interest in them, incubate with it, and those molecules get attached with this with those gels, and then after that we pack the column, and then we run over product of interest to which we want to separate, with the protein which we want to separate. The mixture we entered from the top, and we allow these columns to run under the gravity, and they then yeah, the protein of interest of is get separated on the basis of mass, on the basis of ions, on different bases. In the same manner, this packed bed bioreactor works. So you are having immobilized your biocatalyst in the packed column, and then you fed with the nutrient from the top or from the bottom. So one of the disadvantages of packed bed is the change flow characteristics due to alteration in the bed porosity during operation. As it is a wastewater, it contains some other particles which are initially not very much of importance, or you can say not of the big size, but when it enters this packed bed, it becomes the hindrance for the normal flow of the water, and it affects the bed porosity. आप लोगों को अगर मैंने जो बताया कि आयन एक्सचेंज या जेल क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी हुई है, तो उसका आपको पता होता है कि जो जेल बीड्स हैं उनके अंदर भी पोर्स होते हैं। वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर से क्रॉस करना है या बाहर से क्रॉस करना है, या आपका जो आपने अपना उसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है वो आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेता है। तो इस बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो पैक्ड बेड है या जो कैटल बायोफिल्म बनी हुई है, उनके अंदर भी पोरस कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये पोरोसिटी जो है ये जब ये प्रोसेस रन हो रहा होता है उस दौरान उस पोरोसिटी के अंदर ऑल्ट्रेशन आ जाती हैं, किस वजह से? वाटर के अंदर उन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो कि एक्चुअली में विजिबल या फिल्ट्रेशन से पास कर जाते हैं, लेकिन चूंकि जेल बीड बहुत छोटे साइज का होता है उसके अंदर जाके ये क्लॉग हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सो वाइल वर्किंग विद द सॉफ्ट जेल्स लाइक एल्जिनेट्स एंड क्रेजिनिन, द बेड कॉम्पेक्शन विच जनरली अकर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन रिजल्ट इन हाई प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड। अब चूंकि सॉफ्ट जेल्स हैं तो जब उनके ऊपर आप वेदर यू आर एडिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द top side or down bottom side, it doesn't matter. When the certain part of the column it get compact with each other, that region, that the pressure in that region becomes higher. Okay, and due to this reason, there's a problem with the packed bed bioreactor. So they are generally used where substrate inhibition governs the rate of reaction. ज़्यादातर इसको उस वक्त यूज करते हैं जब जो आपका सबस्ट्रेट है ना वो किस तरह काम करता है, इनहिबिशन करने से रेट ऑफ रिएक्शन बनता है। ठीक है, कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि किसी एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं तो वो जो है अपना प्रोसेस बनता है उनका। So the packed bed reactor are widely used with immobilized cells. Pump is required to make fluid move through the packed bed. Obviously pump चाहिए fluid को move करवाना है। Several modifications such as tapered bed to reduce the pressure drop across the length of the reactor, inclined beds, horizontal bed, rotatory horizontal reactors, they have been tried with limited success. So different जो बेड की ओरिएंटेशंस हैं उनको चेक किया गया है लिटरेचर में, लेकिन इसकी लिमिटेड सक्सेस रही है। So here is the packed bed reactor for treating groundwater contaminated with halogenated aliphatic hydrocarbons.
आपका जो ग्राउंड वाटर है वो उसके अंदर हेलोजेंस के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कंटेमिनेशन है, तो उसकी क्लीनिंग का ये प्रोसीजर है, जिसके अंदर ये आपका इमोबिलाइज्ड बेड है। यहाँ से रॉ ग्राउंड वाटर आ रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब ये है कि वो उसके अंदर डाइल्यूशन कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, पॉजिटिवली डिस्प्लेस कर रहा है। और फिर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप आ गया जो सेंट्रीफ्यूज करके आपके को माइनिंग जेट इसके अंदर एंटर कर रहा है, और साथ एयर इनलेट भी है। अब आपका जो ग्राउंड वाटर है वो एयर के साथ मिक्स होके, तो जो है ये स्कीमेटिक डायग्राम है, जो फर्मेंटर होगा वो उसके अंदर सब कुछ इकट्ठा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इमोबिलाइज्ड बेड के अंदर शामिल हो रहा है। यहाँ पे जो भी रिएक्शंस, जो भी जिस तरह से भी ये क्या कहते हैं, जेल्स के साथ अरेंज करके बायोफिल्म बनी हुई है माइक्रोब्स की, वो इस ग्राउंड वाटर को इसके अंदर हेलोजिनेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उनको चेंज करेंगे और रिएक्टर डिस्चार्ज बनेगा। और यहाँ से जो जितनी भी चीजें हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो रीफ्लो रिसाइकल होकर सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू दोबारा इसके अंदर जा रहा है। अब ये जो आपका ये इनलेट के बाद ये वाला जो पोर्शन है रैपिड मिक्स हीटेड रिएक्टर का, इसके अंदर टेम्परेचर 30 डिग्री पर मेंटेन किया गया है, ताकि जो मैक्सिमम एवेपोरेटिव चीजें हैं वो एपरेट हो जाएं। और कंडेंसर भी है जो कि साथ साथ इसको कूल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैक्ड बायोरिएक्टर काम कर रहा है। इसके बाद है ट्रिकल्ड बेड रिएक्टर, ये भी इसी की एक सब टाइप आप समझ लें है कि लिक्विड इज स्प्रेड ऑन टू द टॉप ऑफ द पैकिंग एंड ट्रिकल डाउन थ्रू द बेड इन स्मॉल रिवरलेट। आपने अपना जो मिनरल न्यूट्रिएंट है उसको वॉश वाटर के थ्रू इसमें एडअप किया है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये उसके बाद का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। जब आप अपने वेस्ट वाटर को एक दफा क्लीन कर लें, उसके बाद दोबारा आप उसको एक ट्रिकल बेड रिएक्टर से पास आउट करते हैं, जहाँ पे फिल्टर बेड विद बायोफिल्म्स है, ठीक है। ये पैक बैग की ही बेड की ही एक एग्जांपल है, चूंकि अब इसमें वाटर ऊपर से आ रहा है तो ट्रिकल डाउन हो रहा है। इन द प्रोसेस द गैसियस पोल्यूटेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैरियर इज एब्जॉर्ब्ड एंड इमीडिएटली बायोलॉजिकली मिनरलाइज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो ये एंड में यहाँ पर ये रॉ गैस दे रहे हैं, ऊपर से लिक्विड आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्लीनिंग हो रही है। Next is the membrane reactor. Membrane reactor is a flow reactor in which membrane are used to separate cell or enzyme from the feed or product stream. Using usually a continuous system, products may be removed continuously, but in some application they be harvested intermittently or at the end of the reaction. Polymeric microfiltration 0.1 to 5 micrometer of ultrafiltration 20 to 1000 angstrom membranes are commonly used. इतनी फाइन मेम्ब्रेन्स यूज करके आप जिस तरह मैं बात हमने की थी ना कि जो आपका स्टिर टैंक रिएक्टर है उसके अंदर इमोबिलाइजेशन डिफिकल्ट है मेंटेन करना, तो अगर आप जोन ऑफ ग्रोथ और जोन ऑफ जो कलेक्शन है प्रोडक्ट है उसको अलग कर लें तो आप मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल वहां पर ये मेम्ब्रेन्स आप यूज कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन्स आर ऑब्टेन्ड इन होलो फाइबर और फ्लैट शीट फॉर्म. These are applied in enzymatic reactions, production of primary and secondary metabolite by microorganisms and plant cell, generation of antibodies by mammalian cell. अच्छा, ये मैंने आप लोगों को एक्टिविटी में यहीं से क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किसी एक का आपने प्रोसीजर लिखना है कि ये किस तरह करता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, या आपका होमवर्क है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर काम कैसे करता है। सपोज प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस करानी है तो वहाँ मेम्ब्रेन रिएक्टर किस तरह काम करेगा, ये आपने इसको सर्च आउट करके मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है, और चीटिंग नहीं करनी एक दूसरे से। Consequences of retention of cell or enzyme within the reactor. This allow the reactor to be continuously perfused without worrying about washout. Obviously again membrane bioreactor में यही हो रहा है कि आपके एंजाइम और सेल जो है वो रिटेन हो रहे हैं, तो ये आपको वॉश आउट की टेंशन नहीं, बिकॉज ये यूजली वर्क कर रहा है कॉन्टिन्यूस स्टेज में, continuous mode of operation में इस्तेमाल हो रहा है। मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोवाइड एन इन सिट्यू सेपरेशन ऑफ सेल्स एंड एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये मेम्ब्रेन जो है रिएक्टर के अंदर भी डिवीजन करा देगी सेल्स की एंजाइम, जो चीज सॉल्युबलाइज हो जाएगी वो ऑब्वियसली क्रॉस कर जाएगी, और जो चीज सॉल्युबलाइज नहीं हो सकती वो मेम्ब्रेन के रिटेन रहेगी। Compared to immobilization technique, no chemical agents or harsh condition are employed. जो आपके पीछे immobilization techniques हैं उसके अंदर तो आपको कोई ना कोई मेथड यूज करके उनको adhere कराना था, कोई ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट होती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके ऑन द बेसिस ऑफ पोर साइज जो है वो मॉलिक्यूल्स और ऐसे एंजाइम्स और सेल्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं।
Challenges क्या है membrane reactors में? Cells and enzyme entrapped within membrane reactor are subject to diffusion and convection that can render its distribution heterogeneous. अब obviously हमें पता है कि reactor के अंदर homogeneous environment create होना चाहिए, तो यहाँ पर entrapment की वजह से एक heterogeneous condition develop हो सकती है। तो इसको जो है ना, ये चैलेंज है मेम्ब्रेन रिएक्टर में कि इस हेट्रोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना मेंटेन रखना होमोजेनस के अंदर। एन अनइवन फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस चैनल इन अ मेम्ब्रेन रिएक्टर कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट। और जो फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, किसी साइड पर ज्यादा हो जाएगी और चैनल्स बन जाएंगे अंदर। तो ऑब्वियसली जब आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते कि वो इस तरह से फ्लो नहीं करेगा और इस तरह फ्लो नहीं करेगा, उसने जिस तरह फ्लो करना है वो उस तरफ जाएगा। तो आपने बस उसको मेंटेन करना है कि आपने उसको सीक्वेंस में रखना है, कोई इस तरह के मेथड्स जनरेट करने हैं कि आपका जो फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेम्ब्रेन रिएक्टर के अक्रॉस इक्वल रहे। एंड दैट्स इट। इसके साथ ही हमारे टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर एंड हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इंडस्ट्रियल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से कोई क्वेश्चन है अगर आपसे तो प्लीज आप बिल्कुल यू आर वेलकम टू आस्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।